बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये लेक्चर 45 है टोफल सीरीज़ का फॉर द बिगनर्स। आज के लेसन में हम एडजेक्टिव्स को स्टडी करेंगे विद लिंकिंग वर्ब्स विच इज़ ऑल्सो नोन एज कॉपीलेटिव वर्ब्स। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स स्टार्ट द लेसन। A special category of verbs which the linking verb is actually a special category of verbs which connects or links the subject with the subject complement, which is also known as predicate adjective. So unlike most of the verbs, these linking verbs don't show action. We know a verb by the fact that they show action. Unlike this, जो आपके linking verbs हैं, they are not the ones who show actions. So they must be modified by adjective or not by adverbs. So पहले हम इसकी लिस्ट को ग्लांस थ्रू करते हैं और फिर हम फर्दर इसकी ग्रामर्स को स्टडी करेंगे. So the list of linking verbs is be, become, remain, stay, appear, seem, sound, feel, look, smell, taste. So these are the linking verbs जिनका काम है कि कनेक्ट करते हैं सब्जेक्ट को विद द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. इसकी कुछ एग्जाम्पल को हम स्टडी कर लेते हैं. मैरी फील्स बैड अबाउट हर टेस्ट ग्रेड. सो द वर्ड बैड इज एक्चुअली एडजेक्टिव. सो आप देख सकते हैं कि this word feel is connecting the subject with the rest of the subject complement. The second example is children become tired quite easily. Again, this word quite is an adjective. Lucy will look radiant in her new dress. The example 4, they were sorry to see us leave. They were sorry to see us leave. Example 5, the flowers smell sweet. The flowers smell sweet and the soup tastes good. These are all you can see are just adjectives. Now we spoke about the whole list of linking verbs. Let's dig into separate किसको हम कैसे हम adjust करेंगे. So these three, be, become and remain, they can be followed by the noun phrases as well as by adjectives. So far हमने study किया कि जो वो list of linking verbs है, they can only be modified by the adjectives. But the three of them, like be, become and remain, they can also be followed by noun phrases as well as by adjectives. हम इसको study करते हैं किस तरीके से होगा. First example is they remained sad even though I tried to cheer them up. So the word sad is adjective for sure. So the word remain is followed by adjective even though I tried to cheer them up. Similarly, the second example, Dong remained chairman of the board despite the opposition. यहाँ पे the same linking verb is connecting this or subject, but here we have noun instead of the adjective and the sentence yet makes sense. Example 3, children often become bored at meetings. This is again adjectives and become is connecting with the bored. So it's followed by the adjective. Another example, children became class president after a long hard campaign. So the word became is followed by this noun phrase which is class president. So the linking verb can be followed either by adjective, the three of them, be, become, and they can be followed either by adjective. Another example, Sally will be happy when she hears the good news. So the word be, linking verb is followed by adjective here, and the same be can be followed by noun phrase which is like Ted will be prompting this near. So the word prompting is a noun phrase which is following by the linking verb be. We spoke about the three linking verbs, be, become and remain. Now we'll talk about the four other linking verbs which are feel, look, smell and taste. Four of them, they may also be a transitive verbs and take a direct object. ये the transitive verb के भी तौर पे serve कर सकते हैं और they can take a direct object as well. So when they function in this way, they become active and are modified by the adverbs. अगर they are taking a direct object and serving as the transitive verbs, तो ऐसे में they can be modified by the adverbs. Again, remember if the four of these linking verbs like feel, look, smell and taste, if they are acting in a transitive verb means ये directly direct object को ले रहे हैं, तो in that case they can be that makes them active. As a result, they will be modified by the adverbs. Notice the following pairs of sentences which will come in the next slide. Those verbs which take objects, they are active. If they take object, they will be active. And those which do not, they will be linking and they will be followed only by adjectives. But those who take objects, they are active and they can be modified by the adverbs. The first example, the doctor felt the leg carefully to see if there were any broken bones. So the word felt here is followed by the leg, which makes this felt
Transitive verb, as a result, this can be modified by the adverb carefully. क्योंकि now here it is working as in the transitive verb format. It is active. When it is active, it can be modified by the adverb. Second example, Mike felt ecstatic after passing his law school exam. Here it is not followed by any object. As a result, it is not active. जब ये active नहीं है, तो it is only serving as a linking verb. As a result, it can only be modified by the adjective, which is ecstatic here. Another example, Professor Ingels looked at the exams happily. Now the word look is followed by the object, the exams. As a result, अब यहाँ पे ये active तौर पे सर्व कर रहा है और transitive verb. जब भी linking verb as a transitive verb के तौर पे सर्व करेगा और active होगा, तो ये हमेशा modify होगा by the adverb. As a result, happily verb comes in this sentence. Example 4, Joe does not look happy today. Now this word look, which is a linking verb, here it is not followed by any object. As a result, it is not a transitive verb. It is not active. So it just acts as a linking verb. As the result, it will only be modified by the adjective, which is happy here. Few more examples to look at. The lady is smelling the flowers gingerly. The word smell is followed by the object, which makes this word smell a linking verb or a transitive verb. As a result, it is active. Now when it is active, it will be only modified by the adverb, which is gingerly here. Another example, after being closed up for so long, the house smells musty. The house smells musty. Now the word smell here is just followed straight by adjective, because यहाँ पर smell as a transitive verb नहीं है. It is not active verb. It is just a straight linking verb. तो जब भी ये linking verb के तौर पे serve होगा without having any object afterwards, तो ये सिर्फ adjective से ही modify होगा. Another example, the chef tasted the meat cautiously before presenting it to the king. Now the word tasted is followed by the object the meat. यहाँ पर जो test है वो चूँकि as a transitive verb use हो रहा है. Transitive means it is followed by object, as a result which makes it active. और जब as an active serve करेगा तो it will only be or modified by the adverb, which is cautiously here. Another example, your chocolate cake tastes delicious. The same word taste is here as well, but यहाँ पे ये सिर्फ as a linking verb serve कर रहा है, because there is no, it's not transitive, it's not active with no object following afterwards, so it will be just modified by the adjective. So this was all about the linking verbs, कि आपने उसको adjective के बाद कैसे follow करना है और adverb के बाद कैसे करना है. So I hope this exercise will help you to get the clarity of the concept more. Just pause your video here. ये 10 questions हैं जिसके अंदर हर sentence में आपके पास parentheses में oblique के साथ adjective और adverb given है. आपने इनको pick करना है with your understanding of the sentence कि कहाँ पर आपका जो linking verb है वो adjective से follow करेगा, कहाँ पर वो adverb से modify होगा. So just pause your video here. Get the idea of this, all answers of these 10 questions. Once you are done with this, you can jump straight into the answers. So the people who are already done with the answers, they can jump to answers. They can go to the next slide for the answers. So let's start the answer of these questions. Now question 1, your cold sounds terrible. The word sound is just a straight linking verb here, with no adjective, with no transitive, no object afterwards, so it will be only modified by the adjective, which is terrible. The second question, the pianist plays very well. Again, just a straight simple, no other thing to be said. Question 3, the food in the restaurant always tastes good, because the word taste is not followed by any object. As a result, it's just a straight linking verb, so हम इसको सिर्फ adjective से follow करेंगे. Question 4, the campers remain calm despite the thunderstorm. So the word remain followed by adjective only, because the word remain is here is just a linking verb. It's not active. It is active only when it is followed by the object, which makes it transitive verb. As a result, it becomes active. जब भी linking verb के बाद object होगा, it will make it active, because it will be serving as a transitive verb, and as a result, it will be adverb followed by adverb. So मैं चीज़ों को बार-बार से repeat करूँगी just to have more clarity, और ये बातें आपको अच्छे से remind हो जाएं. Now question 5, they became sick after eating the contaminated food. The became is just a straight linking verb, so it will be only followed by adjective with no adverbs at all. Now question 6, Professor Calendra looked quickly at the students' sketches. Again, the word look is straight followed by quickly at the students' sketches. ठीक है. The question 7, Paco was working
diligently on the project. So आपके पास यहाँ पर जो word है which is working, it is just आपका straight verb है and it's nothing, no linking verb, so आप इसको adverb से कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उससे मॉडिफाई कर सकते हैं. क्वेश्चन 8, Paul protested vehemently about the new proposals. Again, there you have vehemently a adverb which modifies to your verb protest. Question 9, our neighbors appeared relaxed after their vacation. So the word appear is followed by straight adjective because it's a linking verb, and as a result it will not be followed by with no object afterwards, so there is no question to have an adverb. As a result, the word relax or adjective comes in. Final question was, the music sounded too noisy to the classical. So the noisy adjective comes in with the verb to. So I hope this all makes. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम. ये लेसन 47 है टोफल सीरीज़ फॉर द बिगनर्स का. आज के लेसन में हम मल्टीपल नंबर कंपैरेटिव्स को स्टडी करेंगे. इससे पहले लेसन 46 में हम कंपैरिजन को इन डेप्थ स्टडी कर चुके हैं. सो लेट्स स्टार्ट द लेसन. नंबर मल्टीप्लाइज कैन इंक्लूड हाफ, ट्वाइस, 3 times, 4 times, etc. जब आपने नंबर मल्टीप्लिकेशंस बतानी होंगी अपनी कंपैरिजन्स में, तो आप इन लफ्ज़ों का इस्तेमाल करेंगे. देखें कि कोई चीज़ हाफ़ हो सकती है, कोई चीज़ डबल हो सकती है जिसको हम ट्वाइस से शो करेंगे, या उससे ज़्यादा को हम 3 times, 4 times और मल्टीपल टाइम्स के साथ मेंशन कर देंगे. इसके लिए जो फार्मूला इस्तेमाल होगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर, वो इस तरीके से होगा कि यू विल हैव अ सब्जेक्ट दैट फॉलोड बाय verb, then number multiple आ जाएगा, यानी कि it can be half, it can be twice, or it can be any of the above mentioned, or it can be many more, followed by as, then much or many आएगा. This will be followed by a noun, then again the word as comes, and then followed by a noun pronoun. So that's how you are going to construct. We can look into this again. यानी कि we have subject followed by verb, then number multiple होगा which is half, twice, 3 times, 4 times, etc., 100 times, and then a word as comes, then much and many आएगा. This followed by noun, and then word as, and then noun and pronoun. One thing which is important to note is that it is incorrect to say twice more than. हम कभी twice more than का word इस्तेमाल नहीं करेंगे. This is an incorrect way to speak and to write. So these are some of the examples to understand. This encyclopedia costs twice, this is your number multiple, as much as the other one. This encyclopedia, यानी कि हम सिंपल ये बता रहे हैं कि जो कॉस्ट इंसाइक्लोपीडिया की है, ये दूसरे इंसाइक्लोपीडिया के मुकाबले में ऑलमोस्ट के मुकाबले में डबल है. तो यू जस्ट मेंशन दैट दिस इंसाइक्लोपीडिया कॉस्ट्स ट्वाइस एज मच एज द अदर वन. तो दोनों की जो कीमतों में वो डबल का फ़र्क है. सेकेंड एग्जाम्पल इज़ एट द क्लैम्बैक last week Fred ate 3 times as many oysters as Barney. So instead of telling you the numbers, आपने just multiple numbers के ज़रिए ये बता दिया कि जो क्वांटिटी के अतबार से फ्रेड ने बार्नी से 3 times ज़्यादा oysters खाए थे at some lunch or dinner. Third example is Jerome has half as many records now as I had last year. So इसमें आप बता रहे हैं कि नंबर अमाउंट के हिसाब से, records के हिसाब से जीरोम के पास आधे हैं जो कि मेरे पास लास्ट ईयर थे, उसके मुकाबले में इसके जो नंबर तादाद है वो हाफ़ है. अब रिगार्डलेस से नंबर कोई भी है, बट दैट नंबर इन क्वांटिटी इज़ हाफ देन व्हाट आई हैड लास्ट ईयर. सो डबल कंपैरेटिव में आपका जो सेंटेंस होगा दैट बिगिंस विद अ कंपैरेटिव कंस्ट्रक्शन, एंड जो आपका सेकंड क्लॉज है दैट ऑल्सो मस्ट ऑल्सो बिगिन विद द कंपैरेटिव. सो इट मीन्स आपके पास जब आप डबल कंपैरिजन्स कर रहे हैं तो आपके ना सिर्फ फर्स्ट मेन क्लॉज में आपके पास कंपैरेटिव कंस्ट्रक्शन होगा, बट योर सेकंड क्लॉज मस्ट ऑल्सो बिगिन विद अ कंपैरेटिव कंस्ट्रक्शन. इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम. इसमें आपके पास द फॉलोड बाय वर्ब है, followed by comparative है, then the subject and verb comes in. Again the word the comes in, then again the second आपके second clause में भी comparative structure होगा, so then word comparative comes again, and then followed by subject and the word verb, and the verb comes in. So the structure is like the comparative structure followed by subject and verb, and the comes again, then comparative structure and subject verb. So that's how you make the double comparisons. अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं. The hotter it is,
the word hotter. This is this is first comparative, the hotter. So the hotter again मुझे रिमाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने जो 46 लेसन में एडजेक्टिव्स को कैसे आपने सिंगल सिलेबल, डबल सिलेबल्स या 3 सिलेबल्स को कैसे अपने लिए कंपैरेटिव बनाना है वो हम स्टडी कर चुके हैं. तो इसलिए I'm not mentioning कि हमने हॉट को hotter कैसे किया है. So the hotter it is, the more miserable I feel. The hotter it is, because we are comparing this is two comparisons, so the two sentence clause. In the first clause, the sentence begins with the comparison, which is the hotter it is, followed by the second clause. Again, उसमें भी आप पहले उसको भी comparison से start करेंगे. So the more miserable I feel. The higher we flew, the worse Edna felt. Right, so this comparison followed by second comparisons, and both clauses of the sentence begin with a comparison. The bigger they are, the harder they fall. The bigger they are, the harder they fall. The sooner you take your medicine, the better you will feel. The sooner you take your medicine, the better you will feel. The sooner you leave, the earlier you will arrive at your destination. The sooner you leave, the earlier you will arrive at your destination. Few more things to know about double comparatives. ये आपके पास एक सेंटेंस स्ट्रक्चर और है जिसमें आपके पास the more followed by subject, verb and the word the again, and followed by second clause of the sentence, जिसमें आपके पास फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर वही comparative followed by subject and verb है. इससे पहले जो हमने अपना सेंटेंस स्ट्रक्चर देखा था उसमें the comparative and then subject verb था, and then second clause भी उसी सेंटेंस सीक्वेंस में था. बट समटाइम्स आप डबल कंपैरेटिव्स का सेंटेंस स्ट्रक्चर इस तरीके से भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि आपके पास फर्स्ट मेन क्लॉज में द मोर होगा, फॉलोड बाय सब्जेक्ट एंड वर्ब, एंड देन सेकंड सेंटेंस क्लॉज में आपके पास फिर सेंटेंस का स्ट्रक्चर में द कंपैरेटिव फॉलोड बाय सब्जेक्ट एंड देन वर्ब होगा. इसको हम एग्जांपल से स्टडी करते हैं. द मोर यू स्टडी, द स्मार्टर यू विल बिकम. So the word the more is first comparative. So the more you study, this is you subject, verb is study. The smarter, this is your comparative, you will become. The more he rode the boat, the more he rode the board, the farther away he got. The farther away he got. The more he slept, the more irritable he became. The more he slept, the main clause, second clause, the more irritable he became. So we spoke about the number comparison and then double comparisons. अब हम इसमें स्टडी करेंगे the sooner. We know the word soon, so this er addition makes it a comparative form. If the expression no sooner appears at the beginning of a sentence, the word then must introduce the second clause. Again, अगर आपके पास सेंटेंस में दो क्लॉजेस हैं और आपका फर्स्ट मेन क्लॉज स्टार्ट हो रहा है नो सूनर से, देन इन दैट केस आपके पास जो सेकंड क्लॉज है उसमें देन का होना ज़रूरी है. उसको हम फार्मूला में भी समझ जाएंगे. सो दिस इज़ द नोट ऑल्सो दैट द ऑक्सिलरी precedes the subject. Auxiliary should come before the subject. So the sentence will look like the word no sooner in the main clause, followed by an auxiliary, this followed by subject and then verb, then comes in the second clause and then subject and the verb. So the sentence construction is like आपके पास जो आपका जो sentence start हो रहा है वो no sooner से हो रहा है. This followed by auxiliary, which is before subject, then a verb comes then in the second clause of the sentence the word then comes, and then subject and verb. So the sentence will feel like no sooner had we started out for California than it started to rain. No sooner, this is the auxiliary, had we started out for California then it started to rain. Next example, no sooner will he arrive then he will want to leave. No sooner will he arrive, this again it's not he will arrive, it's the auxiliary is before subject. No sooner will he arrive, this is the second clause, then he will want to leave. Then comes no sooner had she entered the building, no sooner had she entered the building then she felt the presence of somebody else. So again आपके पास second clause में आपने the word then use किया है, there is no comparison in the second sentence, and the first main clause begins with the word no sooner. This will be followed by auxiliary had, will, had, or any auxiliary just before the subject comes in. Again, one more important thing to note is the no longer means not anymore. No longer means not anymore. Never use not longer
in a sentence that has this meaning. So अगर आपने कहीं किसी जगह पे not anymore को mention करना है तो you can use the word no longer, but not longer is an inappropriate or incorrect word to mention. So you will never use the word not longer. It will be no longer if you are referring to something not anymore, something that is finished. You can use it no longer, but the not longer is not right to say at all. For example, John no longer studies at the university. He is done with his studies. So it's done, it's over. So John does not study at the university anymore. You will not say John not longer studies. Not longer is not right to say. Second example is Cynthia may no longer use the library because her card has expired. So she has stopped using the library because of expiration of her library card. So Cynthia may not use the library anymore because her card is expired. So no longer is the right word, which means not anymore. It has nothing to do with the word no longer, not longer. So we spoke about sooner as well. Now what about the positives, comparatives and the superlatives? Superlative की हम एक छोटी सी ग्लिम्स की स्टडी हम लेसन 46 में भी कर चुके हैं. यहाँ पर हम इसको इन डेप्थ देखेंगे. पॉजिटिव, कंपैरेटिव्स एंड सुपरलेटिव्स को हम कैसे स्टडी करेंगे. मोस्ट डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स, अगेन एडजेक्टिव्स के लेसन में हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स को पढ़ चुके हैं. मोस्ट डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स हैव 3 फॉर्म्स: द पॉजिटिव हैप्पी, द कंपैरेटिव द हैप्पियर एंड द सुपरलेटिव हैप्पीएस्ट. आपके जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव फॉर्म्स हैं वो 3 तरीक़ों से आप फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. वन इज़ पॉजिटिव, one is comparative and the other is the superlative form. So for instance, if one thing is hot, which is positive, then the comparative form will be hotter. इसको हम कैसे एडजेक्टिव को कंपैरेटिव में बनाते हैं, ये हम अपने लेसन 46 में कंपैरिजन के टॉपिक में स्टडी कर चुके हैं. चूँकि यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट कॉन्सोनेंट है दैट इज़ टी, और उससे पहले जो हमारा वर्ड है दैट इज़ अ वाउल. तो ऐसे में आप उस लास्ट कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं, इनके डबल टी कर देंगे और उसको ऐड कर देंगे ई आर टू मेक इट कंपैरेटिव. सो जस्ट क्विक रिकैप टू मेंशन यू हाउ टू मेक हॉट अ कंपैरेटिव हॉटर, एंड इट्स सुपरलेटिव फॉर्म विल बी हॉटेस्ट. हमने इसको एस टी ऐड कर देंगे इंस्टेड ऑफ हैविंग ई आर टू मेक इट सुपरलेटिव फॉर्म. इसी तरीके से इफ़ इंटरेस्टिंग इज़ पॉजिटिव, more interesting will show its comparative form, and to show it even better, even more, it will be superlative form will be most interesting. Sick becomes sicker and becomes sickest. Similarly, colorful, जहाँ पे हमारे पास FUL ending आपके पास एडजेक्टिव्स होंगे, उसको हम हमेशा से उसके शुरू में हम मोर ऐड करेंगे टू मेक इट सुपरलेटिव. सो द कलरफुल बिकम्स मोर कलरफुल and superlative form will be most colorful. So that how the positive, comparatives and superlatives are formed from the descriptive adjectives. Furthermore, the positive shows no comparison. जब आप सिंपल हॉट कह रहे हैं तो आप यहाँ पे कोई कंपैरिजन मेक नहीं कर रहे हैं. इट डिस्क्राइब्स ओनली द सिंपल क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, थिंग और अ ग्रुप. फॉर एग्जाम्पल, द हाउस इज़ बिग. सिंपल आप इसमें पॉजिटिव में ये बता रहे हैं कि ये देयर इज़ नो कंपैरिजन एट ऑल. इट्स जस्ट अ क्वालिटी एक्सप्रेसिंग रिफ्लेक्टिंग ईदर अ नाउन और अ प्रोनाउन ऑफ अ पर्सन और अ थिंग और अ ग्रुप फॉर दैट मैटर. इट्स जस्ट अ स्ट्रेट सिंपल क्वालिटी विद नो कंपैरिजन्स मेड एट ऑल. तो फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ द हाउस इज़ बिग. We are not comparing it with anybody's house. Second example is the flowers are fragrant. So we are not comparing a flower fragrance from a perfume's fragrance or any other fragrance whatever. It's no comparison. It's just a plain simple quality explanations. So positive always made you or always used to say something, speak about somebody's quality. However, the comparatives involves two entities and shows a greater or a lesser degree of differences between them. जब हमने आपको फर्स्ट अभी बताया था कि हम पॉजिटिव के पास कंपैरेटिव होता है, तो कंपैरेटिव हम इसलिए बनाते हैं जब हमें दो एंटिटीज़ के दरमियान हायर और लेसर डिग्री, ग्रेटर और लेसर डिग्री की डिफरेंसेस बताने हों बिटवीन द टू थिंग्स. फॉर एग्जांपल, माई डॉग इज़ स्मार्टर दैन योर्स. इस वक्त मैं अपने डॉग को किसी दूसरे के डॉग से कंपेयर कर रही हूँ और मैं ये एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जो इसकी स्मार्टनेस है, दिस इज़ मोर इन माई डॉग दैन योर्स. सो सिंस इसमें दो एंटिटीज़ इन्वॉल्व हैं, यानी कि एक मेरा कुत्ता है और एक दूसरे किसी शख्स का कुत्ता है, दो एंटिटीज़ इन्वॉल्व हैं और उसमें हम उसमें स्मार्टनेस कंपेयर कर रहे हैं, तो देयर इज़ काइंड ऑफ अ ग्रेटर और लेसर डिग्री ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द स्मार्टनेस ऑफ द टू डॉग्स ऑफ टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स. सो इट्स यहाँ पर हम स्मार्टर यूज करेंगे. माई डॉग इज स्मार्ट दैन योर्स नहीं होगा, इट विल बी माई डॉग इज स्मार्टर दैन योर्स. इसी तरीके से सेकेंड एग्जाम्पल इज बॉब is more athletic than Richard. So again, इसमें the word more is added to make it comparative. So the Bob is
more athletic than Richard. We will not say Bob is athletic than Richard. एक चूँकि हम इसमें कंपेयर करें तो कंपेरेटिव फॉर्म के लिए हम इसके शुरू में more ऐड कर देंगे for this adjective. Spinach is less appealing than carrots. तो इसमें हम बता रहे हैं कि स्पिनच ऑफ कोर्स एज वेजिटेबल हैज़ नो अपील एट ऑल. सो हम यहाँ पे इसको लेस के ज़रिए इसकी अपीलनेस को लेस को डिमीन कर रहे हैं. तो ऐसे में हमने अगेन इस कंपैरिजन बिटवीन द अपील ऑफ अ स्पिनच कंपेयर टू अ कैरेट. सो स्पिनच इज़ लेस अपीलिंग देन कैरेट्स. इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू कंपेयर टू थिंग्स विदाउट यूजिंग दैन. समटाइम्स आप दो चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं एंड येट यू आर ओमिटिंग दिस वर्ड देन. हाउ? इन दिस केस द एक्सप्रेशन ऑफ द टू विल यूजुअली अपीयर सम प्लेस इन द सेंटेंस. ठीक है, तो ऐसे में आपने द एक्सप्रेशन ऑफ द टू यूज़ कर देंगे अपने सेंटेंस में इन ऑर्डर टू मेक द इन योर सेंटेंस टू मेक दैट कंपैरिजन. अगर आप द वर्ड देन ओमिट कर रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर इन तमाम एग्जाम्पल्स में द वर्ड देन यूज़ किया हुआ था जस्ट टू मेक द कंपैरिजन बिटवीन अ डॉग, between athletic capability of Bob from Richard or spinach and carrots. हमने यहाँ पे then यूज़ किया था. If you want to skip the word then from your sentence or from your construction, in that case आप उन expression of the two add कर देंगे अपने sentence में and that will that's how you can remove the word then. So the sentence structure will look like subject followed by verb, then the word then, the followed by comparative, and then of the two will come which will end with the noun. So it will be look like subject, verb, the followed by comparative, then of the two and noun. और इसको हम रिफ्रेश करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि of the two followed by noun, then subject, verb, the and the comparative comes in the end. So हम दोनों के एग्जाम्पल से भी समझ जाएंगे. अब इन तमाम सेंटेंसेस में comparative मौजूद है दोनों में, लेकिन हमने of the two लिख दिया है instead of then. So you will replace the then with of the two and you can rearrange your sentence this way. So example will be like Harvey is the smarter of the two boys. So यहाँ पर हमने दो बॉयज़ को कंपेयर किया है और हार्वे इज़ फाउंड स्मार्टर दैन द अदर वन. सो अगर हम कहते हैं कि हार्वे इज़ स्मार्टर दैन हिम, तब भी ठीक था. यहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि इन दो बॉयज़ में हार्वे इज़ स्मार्टर, तो हमने दैन ओमिट कर दिया है. सो द सेंटेंस इज लुक लाइक हार्वे इज़ द स्मार्टर ऑफ द टू बॉयज़. और हम सेंटेंस को अगर हम ऑफ द टू को स्टार्ट में लिए तो ऑफ द टू शर्ट्स दिस वन इज़ द प्रीटियर. सो ऑफ द टू शर्ट्स this one again the comparative comes in the end is the prettier. Third example, please give me the smaller of the two pieces of the cake. So cake pieces में जो left over दो हैं उनमें से जो smaller one है one is asking for that one. So please give me the smaller of the two pieces. दो pieces में जो सबसे छोटा वाला है somebody is asking for that to have. So आपने of the two के ज़रिए comparison बता दिया. You don't need to write then here. इसी तरीके से of the two landscapes that you have shown me, this one is the more picturesque. So आपने किसी को दो landscapes शो किए हैं तो somebody has found one more appealing than the other one. So you just rephrase the sentence of the two landscapes that you have shown me, this one is the more picturesque. So आपने यहाँ पर जो superlative आपका जो comparative structure था आपने sentence के आखिर में place किया. Again of the two books, this one is the more interesting. So of the two books, this one is more interesting. So आपका comparative comes in the end and of the two books में आपने बता दिया कि you are comparing one book from the other. Remember, two entities आपके पास जब होंगी तो you are comparing, but when you have more than three or more entities then in that case you have superlative structure. हमारे पास पॉजिटिव जो मौजूद है उसमें हम कोई कंपैरिजन नहीं करते, हम इसमें स्ट्रेट अपनी एक्सप्लेनेशन देते हैं अबाउट हम एक कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेन कर रहे होते हैं किसी चीज़ की, किसी जगह की, किसी ग्रुप की. बट जब हम कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में आते हैं तो दो चीज़ों के कंपैरिजन्स में दो चीज़ों की एंटिटीज़ को अगर हम स्टडी कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो उसमें हम कंपैरेटिव को इस्तेमाल करेंगे. मगर अगर हमारे पास थ्री इससे ज़्यादा चीज़ें हैं, तीन या उससे ज़्यादा चीज़ें हैं टू कंपेयर फॉर एंटिटीज़, तो ऐसे में हम सुपरलेटिव फॉर्म्स को यूज़ करेंगे. In the superlative degree, three or more entities are compared, one of which is superior or inferior to the rest of the others. जब आप कंपेयर कर रहे हैं तो one is comparing then others, तो हम then यूज़ कर रहे थे या of the two यूज़ कर रहे थे. लेकिन जब आप superlative form यूज़ कर रहे होते हैं तो ऐसे में हम एक डिग्री ऑफ इंटेंसिटी मेजर कर रहे होते हैं between three or more entities, और उन सब के अंदर कोई एक चीज़ होती है जो कि superior होती है या inferior होती है among the rest of the others. So three or more entities are compared, one of which is superior or inferior for that matter to the rest of the others. So the following rule applies. You will have a subject, then followed by a verb, then comes the
the word the. This will be followed by adjective that can have est. Again, this is the superlative form. Most, again this is a superlative form when something is बहुत superior. या least के साथ हम adjective कर देंगे which shows कि something is inferior among the all. ठीक है, this will be followed by in plus singular count noun या of plus plural count noun. हम काउंट नाउन्स के हवाले से भी पहले स्टडी कर चुके हैं अपने इनिशियल लेसन्स में. सो हम इसको जब इन यूज़ करेंगे तो हम सिंगुलर काउंट नाउन फॉलो कर रहे होंगे, और जब हम ऑफ का वर्ड यूज़ करेंगे तो दैट विल बी फॉलोड बाय द प्लूरल काउंट नाउन्स. सो अब हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं. जॉन इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द फैमिली. अगैन इसमें हमारे पास द टॉलेस्ट मीन्स अब हमें इस फैमिली में यकीनन 2 बच्चे नहीं, काफ़ी सारे बच्चे हैं. तो फॉर इंस्टेंस अगर 3 या उससे ज़्यादा भी बच्चे हैं तो अमंग देम वी आर जस्ट मेंशनिंग कि वन ऑफ देम विच जॉन इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द फैमिली, राइट. डियाना इज़ द शॉर्टेस्ट ऑफ द 3 सिस्टर्स. अब आपके पास यहाँ पे जब एन था तो दिस फॉलोड बाय अ सिंगुलर काउंट नाउन. अब यहाँ पे जब आपने लिखा द शॉर्टेस्ट तो दैट इज़ द सुपरलेटिव फॉर्म फॉलोड बाय ऑफ द 3 सिस्टर्स. सो यहाँ पे आपने ये दिस इज़ अ प्लूरल काउंट नाउन. ठीक है, तो प्लूरल काउंट नाउन से पहले आपने ऑफ लिखा एंड दिस इज़ द सुपरलेटिव फॉर्म. सो डियाना इज़ द शॉर्टेस्ट ऑफ द 3 सिस्टर्स. दीज शूज़ आर द लीस्ट एक्सपेंसिव ऑफ ऑल एंड दिस इज़ अगैन प्लूरल काउंट नाउन. सो दीज शूज़ आर द लीस्ट एक्सपेंसिव, यानी कि कीमत के हवाले से सबसे ज़्यादा जो सस्ते जूते हैं वो यही हैं. ऑफ ऑल मीन्स वी डोंट नो हाउ मेनी वी आर कंपेयरिंग इट फ्रॉम, बट अमंग ऑल द अवेलेबल शूज़ दिस बीइंग द चीप ऑफ ऑल, cheapest. Again, the last example of the 3 shirts, this one is the prettiest. Again यहाँ पे आपने बहुत सारी 3 शर्ट्स के बारे में बात की है, और अगर हम कहते हैं ऑफ द 2 वो अलग बात होती है. ऑफ द 3 बोल रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास prettiest यहाँ पे सुपरलेटिव फॉर्म हो गया. अगर आप ऑफ द 2 कहते हैं तो दिस वन इज़ द prettier, right. So that's how you should know that अगर 3 or more entities हैं तो then superlative comes. If you're comparing 2 entities then the comparative form comes. Comparative comes. And positive is just to show this the characteristic. It has nothing to do with any comparison whatsoever. One more thing to note, after the expression of one of the followed by superlative, be sure that the noun is plural and the verb is singular. आफ्टर द एक्सप्रेशन वन ऑफ द विच फॉलोड बाय द सुपरलेटिव, आपको ये ख्याल रखना है कि आपका जो नाउन होगा दैट वुड बी प्लूरल एंड द वर्ब इज सिंगुलर. इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, दिस इज सुपरलेटिव. टेनिस प्लेयर्स, सो प्लेयर्स दिस इज नाउन. सो वन ऑफ द टेनिस प्लेयर्स इन द वर्ल्ड इज जॉन बॉर्ग. सो आपके पास जो वर्ब है दिस इज सिंगुलर, आपका जो नाउन है दैट इज़ प्लूरल. सो ऑफ द ग्रेटेस्ट टेनिस प्लेयर्स, क्योंकि वी आर आस्किंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट सो मेनी in the world. So is John Borg, this is a singular verb will comes followed by this guy. Again, Kuwait is one of the biggest oil producers in the world. So this आपके पास आपका जो one of the expression का एक बाद superlative form के बाद जो आपके पास noun है that it comes with a plural noun and you have a singular verb in that sentence. So one of the biggest oil producers, because यहाँ आप बता रहे हैं बहुत सारे oil producers के बारे में, but you found one of them the best. So the one of them के लिए जब आप word के लिए जो verb use होगा that will be a singular verb. Now comes adverb. Adverbs usually are not followed by er or est that we have studied before as well. Instead, they are compared by adding more or less for the comparative degrees and by adding most or least to form the superlative forms. Adverbs को जब आपने comparative form बनाना होता है तो you don't add er or est जैसे कि हम adjectives में यूज़ करते हैं. Rather हम इसके अंदर अगर हमने comparative degrees बनानी है तो हम more or less का word यूज़ करते हैं. Either something is more comparably better or less comparably better, या अगर हम उसको बहुत अच्छा highest degree form बताना होता है तो हम most और लीस्ट यूज़ करते हैं, यानी कि सुपीरियर और लीस्ट और इन्फीरियर के हिसाब से. तो हम ये टेबल में देख लेते हैं. अगर फॉर इंस्टेंस आपके पास वर्ड केयरफुली है, अगेन दिस इज़ पॉजिटिव, सो इट्स जस्ट मेयर एक्सप्लेनेशन ऑफ अ क्वालिटी. इसका ताल्लुक आपकी कंपैरिजन से नहीं है. टू मेक कंपैरिजन बिटवीन द टू थिंग्स, आप टू मेक कंपेरेटिव इट कैन बी मोर केयरफुली और लेस केयरफुली. ईदर वन इज़ मोर केयरफुल और लेस केयरफुल, दैट्स इट. इसी तरह से इसकी सुपरलेटिव में या तो मोस्ट केयरफुल हो जाएगा या लीस्ट केयरफुली हो जाएगा. इसी मोस्ट केयरफुली और लीस्ट केयरफुली.
इसी तरीके से पॉजिटिव में अगर cautiously है which is an adverb because it ends with an ly, द कंपेरेटिव विल बी मोर cautiously, या तो कोई बहुत ज़्यादा मोहतात होगा या लेस cautiously या कम मोहतात होगा। इसी तरीके से सुपरलेटिव में मोस्ट cautiously सबसे ज़्यादा मोहतात कौन होगा, और लीस्ट cautiously सबसे कम। यहाँ पे हम चूँकि अब लीस्ट और मोस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि अमंग ऑल अवेलेबल एंटिटीज़, तो दैट इज़ मोस्ट एंड द लीस्ट। इसकी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। साल ड्रोव मोर cautiously देन बॉब, साल ड्रोव्स more cautiously than Bob. Now this is between the Sal and Bob, so it's just comparison. It is a mere comparison. Now Joe dances more gracefully than his partner. Joe dances more gracefully than his partner. So again, this is comparison between the two, and this is an adverb. That child behaves the most carelessly of all. The child behaves the most carelessly of all. So among all child around, this being the most careless, so the most carelessly is a superlative. आपकी comparison हो रहा है because it's not just two child, it's maybe three or more, right? And here you can see that आपके पास आपने लिखा है of all, among all the available child, this being the most careless one. And this last example, Irene plays the most recklessly of all. So being the most reckless, Irene being found to be the most reckless among all. So again this is a superlative form जिसमें हमारा comparison बहुत सारे लोगों के साथ है. It's not just about two entities. So as a result हम यहाँ पे superlative form the most use करेंगे या the least reckless का use करेंगे. But when it comes to between two entities, so we will use the word comparative. This was all about the comparisons. Now we'll dig into the exercise. I will suggest you to pause your video here. आप 5 questions हैं, 10 questions हैं, 5 questions इस स्लाइड पर हैं, आप इसको पॉज करें। यहाँ पे पेरेंथेसिस के अंदर आपके पास कंपेरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म्स हैं। आप कंपेयर टू कंसिडरिंग द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इसको सेलेक्ट करें और अपना जितना भी आपने लेसन को गो थ्रू किया है उसको एक्सप्लेन, आप उसको अपने दिमाग में मज़ीद इनक्रेव करें। इसके बाद हमारी बाकी 5 सवाल ये हैं। I hope this all makes sense to you. Just pause your slide here and get the answers in your head first on your notebooks, और फिर हम इसके answers को go through करेंगे। I think we are done with the questions now. हम जिन्होंने इसके एग्जाम आंसर्स कर लिए हैं, अब हम आंसर्स को स्टार्ट करते हैं। So let's start the answers. Okay, there are 15 questions instead. Twenty questions, so these are 20 questions to answer the answer. इनके parentheses में आपके पास options हैं, you have to pick one. I hope you are done with the questions now, so let's start the answers. The first question is, of the 4 dresses, I like the red one. अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 के दरमियान डिफरेंस नहीं हो रहा, यहाँ पे मल्टीपल के बारे में बात हो रही है, मोर देन 2 के बारे में बात हो रही है, तो दैट इज़ गोइंग टू बी सुपरलेटिव. सो वी आर गोइंग टू सेलेक्ट द वर्ड बेस्ट. ऑफ द 4 ड्रेसेस आई लाइक द रेड वन बेस्ट. Question 2, Phil is the happier or happiest person we know. So since we know many people, so this being a superlative form, happiest. Question 3, Pet's car is faster than Dan's. Again, this comparison between the two people's cars, so this will be a comparative form. Question 4, this is the creamier or the creamiest ice cream I have had in a long time. So it's been many time you have had many ice creams in your life, so this therefore the superlative form comes in. Question 5, this poster is fuller or more colorful than the one in the hall. Since we know कि colorful जब आपका adjective होगा तो उसमें आपको उसको comparative बनाने के लिए more का word इस्तेमाल करेंगे. It's comparison between the two. So आपने इसको more colorful than the one in the hall. So it's the right answer is the more colorful. Question 6, does Fred feel, and the answer is better today than he did yesterday. So this is comparative form, और this is between the two comparison plus आपका जो word well है, this can never be weller. This is an incorrect word whatsoever. Question 7, this vegetable soup tastes very good.
So this is about a simple quality of the it's just a positive sentence, no comparison whatsoever. Question 8. While trying to balance the baskets on her head, the woman walked more awkwardly than her daughter. It's about a comparison in the work between a woman and her daughter. So it's just a mere comparison. As a result, you will just make it, it's again awkwardly, more awkwardly, it's an adverb. So just since it's just comparison, it has nothing to do with the सुपरलेटिव फॉर्म. एडिशनली आपका जो ऑकवर्डली है, दिस इज़ अ एडवर्ब. एडवर्ब में आप कभी भी कंपैरिजन में ई आर ऐड नहीं करते. इट हैज़ टू बी मोर और लेस, मोस्ट और लीस्ट कंपेयर टू कंपेरिजन में और सुपरलेटिव में. सो दिस वर्ड इज़ इनकरेक्ट whatsoever. Question 9. Jane is the less or least athletic of all the women. Since there are many women, it's a superlative form, so the least will comes in. The question 10. My cat is the prettiest of the two. The prettier of the two. Prettier of the two isliye because we're comparing between the two, so it's just a mere comparison, it's not superlative. Question 11. The summary is the better of the pair. Pair means we're comparing the summary of the two, we are comparing the two summaries, therefore the comparison comes in. Question 12. Your heritage is different from mine. So there comes the word from than mine. Question 13. This painting is less impressive than the one in the other gallery. Again, it's about comparing the two paintings, so it's going to be simple comparison, less impressive. It will not be superlative because least impressive is showing that there are many paintings are comparing, which we are not. Question 14. The colder the weather gets, the sicker I feel. So it's about weather, and we are saying the sicker I feel. It's not sicker. It's going to be the sicker because you are showing it more emphasizing on it. Question 15. No sooner had he received the letter than he called Maria. So this is again simple sentence structure about no sooner that we studied already. Question 16. A mink coat costs twice as much as a sable coat. So it's about the cost of the coat, so it's going to be comparison anyways, and it's about the cost. So depending कि आपकी वो countable है non countable है, you will mention the word more than or as much as, but the word twice as much as compared to the cost of another coat. The question 17. Jim has a few opportunities to play tennis as I. Again, opportunities is not a countable, it's a non countable, so the word few comes in. Question 18. That recipe calls for much more sugar than mine does. So the much comes because the sugar is a non-countable noun. Again, you cannot say one sugar, two sugar, it has to be much sugar, much more. Question 19. The museum is the farther or the farthest away of the three buildings. Since we are talking about the three, it's more than two, so it's no longer comparison, it's going to be a superlative studies, the comparison superlative form. So the museum is the farthest away of the three buildings. The question 20 is George Washington is famouser or more famous than John Jay. So this adjective is incorrect. It will be a comparison because we are comparing one president from another or one human being from another, so it's about comparison of the two human beings, so it will be a comparative form, and more famous is the right word. So this was all about all the questions. अस्सलाम वालेकुम. ये लेसन 48 है टोफल सीरीज़ फॉर द बिगनर्स का. आज हम प्रोनाउंस के बारे में स्टडी करेंगे जिनके बाद वर्ब मौजूद हो एज अ कॉम्प्लीमेंट. सो लेट्स स्टार्ट द लेसन. इन केसेस वेयर आपके पास इन्फिनेटिव यूज़ होता है एज अ कॉम्प्लीमेंट, एनी नाउन और प्रोनाउन जस्ट बिफोर इट विल बी इन द कॉम्प्लीमेंट फॉर्म. हम प्रोनाउन कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में अपनी लेक्चर सीरीज़ की स्टार्ट में स्टडी कर चुके हैं. नाउ दीज आर द लिस्ट ऑफ सम ऑफ द वर्ब्स विच आर ऑलवेज फॉलोड बाय इन्फिनेटिव एंड विच ऑफन रिक्वायर एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एज वेल. सो ये वो वर्ब्स हैं जिनके बाद हमेशा कोई इन्फिनेटिव ही फॉलो होगा और जिनको हमेशा कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी चाहिए. हम इनकी लिस्ट को स्टडी कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल, अलाउ, आस्क, बेग, कन्विंस, एक्सपेक्ट, इंस्ट्रक्ट, इनवाइट, ऑर्डर, परमिट, परसुएड, प्रिपेयर, प्रॉमिस, रिमाइंड, अर्ज एंड वांट. इस पॉइंट पे मैं आपको एक चीज़ और ज़रूर गाइड करूँगी कि हमारे लेसन 18 में हमने वर्ब एज कॉम्प्लीमेंट को बहुत डिटेल स्टडी किया है. अगर आप उस लेसन को पहले एक बार गो थ्रू कर लेंगे तो इस लेसन को आपको कॉम्प्रहेंड करने में बहुत आसानी होगी. अब हम अपना सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं. स्टार्टिंग ऑफ विद सब्जेक्ट फॉलोड बाय वर्ब. नाउ उसके बाद आपके पास कॉम्प्लीमेंट फॉर्म ऑफ ईदर प्रोनाउन या नाउन होगा
और ये इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब है। अगर इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले आपके पास जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा दैट विल बी इन द कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जो आस्क्ड Matty, now this is your noun here, followed by infinitive form of verb to call him when she woke up. We ordered, this is one of the list of the verb जो हम पहले स्लाइड में स्टडी कर चुके हैं। We ordered him to appear in court. I urge you, pronoun, to reconsider your decision. They were trying to persuade him to change his mind. The teacher permitted them to turn their assignments late. You should prepare your son to take this examination. Now these all verbs are followed by a complement form of the noun or pronoun, and then this is followed by infinitive verb form. स्टडी किया वो हमारा कॉम्प्लीमेंट फॉर्म ऑफ वर्ब था, प्रोनाउन और ये नाउन था जब हमारे पास इन्फिनिटिव वर्ब फॉर्म था। हाउएवर जस्ट बिफोर द नाउन जिरन आपका जो नाउन और प्रोनाउन होगा दैट मस्ट अपीयर इन द पोजेसिव फॉर्म। सो द सेंटेंस स्ट्रक्चर विल लुक लाइक subject followed by verb, this will be followed by possessive form of noun या possessive adjective, and this will be followed by आपका gerund form of verb which is a verb plus ing. So the examples will be, we understand your, now this is possessive form, not being able to stay longer. Now this we without regards to not, this makes the sentence negative. आपका जो verb है this is in the gerund form. So we understand your, this is possessive form of pronoun followed by not being able to stay longer. This being is the gerund form of verb. He regrets her leaving. Now this her is a possessive form and this is gerund form of verb. We are looking forward to their coming next year. Now this there is a possessive form, this followed by a gerund form of verb. We don't approve of John's buying this house. Now this John's is a possessive form followed by a gerund form of verb. We resent the teachers not, and we resent the teachers not announcing the test sooner, right? So this is like again the possessive pronoun followed by infinitive verb form. Sorry, this is a gerund verb form, and then we object to their calling at this hour. So again this there is a possessive form followed by a gerund form of verb. So this was all about this verb pronouns which are with verb as complements. I hope this all makes sense. Now हम exercise को start करते हैं. These are the 10 questions to answer. हर question के में आपके पास sentence में parentheses में possessive और complement form of pronoun दिए हुए हैं, depending आपके preceding जो भी वर्ब मौजूद है आपकी उसकी बेसिस पे आपने डिसाइड करना है कि इसको इन्फिनेटिव फॉर्म में होना चाहिए या जिरन फॉर्म में होना चाहिए। सो इस पॉइंट पे अपनी वीडियो को पॉज करें और इनके क्वेश्चंस को आंसर करें और देन वी विल स्टार्ट दी आंसर्स। सो फॉर दोज हु आर डन विद द क्वेश्चंस वी कैन स्टार्ट द आंसर्स नाउ। रिचर्ड इज एक्सपेक्टिंग अस to go to class tomorrow. Now here this is an infinitive form of verb. So इससे पहले आपके पास जो वो होगा प्रोनाउन होगा दैट विल बी इन द कॉम्प्लीमेंट फॉर्म which is us here. Remember our is a possessive form of pronoun. Then question 2, you should not rely on his calling you in the morning. So his is a possessive because आपके जो following verb है this is the gerund form. Question 3, they don't approve of our leaving early. Now this approve of leaving is a gerund form, so there will be a possessive form of pronoun. Question 4, George asked me to call him last night. So to call is a infinitive verb form, so उससे पहले जो आपका pronoun होगा that will be in the complement form. So this is me. If it was my then it shows a possession which is not here because आपका जो following verb है वो आपका gerund नहीं है. Question 5, we understand. अब आप फॉलोइंग अपना वर्ब देखें विच इज़ gerund form. सो इससे पहले जो प्रोनाउन होगा दैट विल बी इन द पोजेसिव फॉर्म विच इज़ his. सो वी अंडरस्टैंड he is leaving too early. Okay, then question 6, John resented George losing the paper. Again this losing is a gerund form verb, so this will be preceded by a noun which is in the possessive form. Question 7, we object to the defense attorney or the defense attorney is calling the extra witness. Again the following verb is आपका gerund form में है, तो उससे पहले जो आपका pronoun होगा वो possessive form में होगा. So in case in that way it is the defense attorneys, it shows the possession. Question 8, we are expecting Henry to call us. So because to call is an infinitive form, so इससे पहले जो आपका pronoun होगा that will be in the complement form. Question 9, they are looking forward to us or our visiting them. So this is ing form, so इससे पहले आपका possessive form of pronoun होगा which is our. In question 10, Susan regrets John's being in trouble. Being is again gerund form of verb, so इससे पहले आपका जो
प्रोनाउन होगा वो भी पोजेसिव फॉर्म में होगा। अस्सलाम वालेकुम। ये लेसन 49 है जिसमें हम नाउन्स फंक्शनिंग एज एडजेक्टिव्स के बारे में स्टडी करेंगे। सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट द लेसन। So in English, many nouns can function as adjectives when they appear before other nouns. For example, a wool coat, a gold watch, a history teacher. So at times अगर function अगर noun एक और noun के साथ आ रहा है तो वो as an adjective भी serve कर सकता है. So the first noun of the combination function as an adjective, describing the second one which function as a noun. So in the combination of the two nouns, the first one as an adjective serve करेगा जिसमें वो second noun को describe करेगा जो दूसरा जो कि एज अ नाउन सर्व करेगा। The nouns which function as adjectives are always in the singular even though they may modify a plural noun. So the noun जो कि आपके जो first noun जो कि एज अ adjective सर्व कर रहा है रिगार्डलेस उसका जो फॉलोइंग नाउन है जिसको वो मॉडिफाई कर रहा है वो प्लूरल ही हो, लेकिन हमेशा जो फर्स्ट नाउन होगा विच इज़ सर्विंग एज एन एडजेक्टिव वो दैट विल ऑलवेज बी इन द सिंगुलर फॉर्म। नंबर नाउन कॉम्बिनेशन ऑलवेज अपीयर हाइफिनेटेड। आप नंबर नाउन को जब भी कॉम्बिनेशन को मेंशन करेंगे तो आप उसको हमेशा हाइफिनेटेड, दिस इज़ अबाउट द राइटिंग कंस्ट्रक्शन, एक टिप है उसके हवाले से कि आप जब आप नंबर नाउन मेंशन करेंगे कॉम्बिनेशन तो हमेशा उसको हाइफिनेटेड के तौर पर लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको देख लेते हैं। वी टुक अ टूर दैट लास्टेड 5 weeks. So we took a tour that lasted 5 weeks. So weeks here function as a noun in this sentence. Week is serving as a noun in this sentence. So अगर इसको आप देखेंगे we took a 5-week tour. अब आप इस sentence में इसको adjective और noun के तौर पे adjust करेंगे तो that sentence will look like we took a 5-week, क्योंकि number noun की combination है तो यहाँ पर आपने 5 again it is showing the number of the following noun, so it is going to be shown in the hyphenated form here. So this combination is like adjective noun combination. So we took a 5-week tour. Second example is his subscription to that magazine is for 2 years. So your function here, the your function as a noun in this sentence. So he has a 2-year subscription to that magazine. He has a 2-year subscription to that magazine. So this 2-year is going to be serving as an adjective. Again इसमें number noun combination है आपके पास तो इसलिए हम इसको hyphen से show करेंगे and this is going to be a noun for in your sentence. Another example, that student wrote a report that was 10 pages long. So this page is a function as a noun in the sentence. So अगर इसको हम noun का adjective बना के लिखेंगे तो this will be like that a student wrote a 10-page report. So this 10-page is again showing in hyphen form because it's a noun combination and it's followed by a report which is a noun. These shoes cost $20. The dollars function as a noun in the sentence. So they are $20. They are $20 again noun combination. So it will be shown as a in hyphen. This will be serving as an adjective followed by shoes which is noun in the sentence. There are $20 shoes. So this was all about the quick lesson of where nouns function as adjectives. अब हम इसकी एक्सरसाइज को गो थ्रू करते हैं। इसमें 10 क्वेश्चंस हैं आपके पास और आई होप कि आप इसको फिल कर लेंगे कि आपने इसको किस तरीके से एडजस्ट करना है, कहाँ पर आपने सेंटेंस में जैसे यहाँ पे 12 स्टोरीज़ है इसको आपने किस तरीके से एज अ नंबर नाउन की कॉम्बिनेशन बनाना है विद हाइफन फॉर्म या जस्ट टू मेक एडजेक्टिव कैसे बनाएंगे, तो हम उसको फिर पहले आप हर स्लाइड पे रुक के आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें, फिर हम इनके आंसर्स को गो थ्रू करेंगे। इट्स जस्ट कि आपने इनमें सिर्फ ब्लैंक है उनको फिल करना है विद द राइट एडजेक्टिव फॉर्म। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हियर विद दिस सेंटेंस। आई होप यू आर डन विद दीज टू। यहाँ पे हमारे पास ये टोटल 10 क्वेश्चन हैं, सो वी विल जस्ट गो वन बाय वन। नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। Then question number 5, again आपने ये blank fill करना है। Question number 6, and the last 2 questions. Now for those who are done with the questions answers now हम उनके लिए आंसर स्टडी करते हैं। First question is Sam's new apartment is in a building
which has 12 stories. So इसका आंसर ये होगा Sam's new apartment is in a 12-story building. So the building is actually a noun and 12-story is an adjective, and और इसमें हमने number noun combination है इसलिए हमने इसको hyphen से separate किया है. Second question, we teach languages. So we are language teachers. So this is noun and here the language has become adjective. So यहाँ पे चूँकि आपके पास although आपका जो noun है वो plural है, लेकिन जब आपने इस language कन्वर्ट किया है into adjective form, adjective pronoun के तौर पे, तो आप देखिए हमने इसको languages को singular कर दिया. जैसे हमने पहले अपने रूल में स्टडी किया था कि adjective form में जब आप noun को यूज़ कर रहे हैं pronoun को, तो वो कभी भी plural नहीं होगा, that will be singular regardless कि उसका जो following pronoun है या noun है जो उसके बाद वो अगर वो plural है भी तब भी आपने इसको singular रखना है. तो हम ये नहीं कहेंगे कि we are languages teacher, बल्कि हम कहेंगे we are language teachers. So हमने noun को यहाँ पर हमने नाउन को प्लूरल कर दिया है और जो उसके शुरू में एडजेक्टिव प्रोनाउन है उसको हमने सिंगुलर रखा है. क्वेश्चन 3, माय पेरेंट्स सॉ अ प्ले इन 3 acts लास्ट नाइट. So my parents saw a 3-act play last night. So again, it's a singular with a noun combination, so with separated by hyphen, and this is an adjective. Question 4, the manager said that the sale would last for 2 days. The sale would last for 2 days. So the manager said that it would be a 2-day sale. So again, it's 2-day is a noun combination separated by hyphen, or this is the adjective of the sentence. Question 5, Hall bought a tool set containing 79 pieces. Hall bought a 79-piece tool set. Right? It's again इसमें ये चूँकि digit में लिखा हुआ है इसलिए हमने इसको hyphen से separate नहीं किया. If it was in numbers, writing in words, तो हम इसको separate कर लेते because it's a noun combination. Question 6, a Margie has a bookcase with 5 shelves. So Margie has a 5-shelf bookcase. So again जब आपने इसको adjective बनाया है तो आपने shelves को singular convert कर दिया. तो bear in mind जब आप noun को जब pronoun को आप as a adjective serve करें तो that will be in the singular regardless कि उसकी जो following noun है वो plural है. Question 7, I need 2 cans of tomatoes that weigh 16 ounces each. So I need 2 16-ounce cans of tomatoes. So again this is adjective singular followed by आपका cans of tomatoes. Question 8, I'm looking for a pressure cooker that holds 6 quarts. So answer is I'm looking for a 6-quart pressure cooker. So again separated by hyphen, and this is a singular but it's an adjective. Question 9, he is a specialist at building houses made of bricks. So he is a specialist at building brick houses. Again, this brick is serving as an adjective here and again singular. Question 10, Mrs. Jason's just bought her daughter a bicycle with 10 speeds. So Mrs. Jason just bought her daughter a 10-speed bicycle. So again this is adjective singular with if it's noun combination then it will be separated with a hyphen. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम. ये लेसन 50 है जिसमें हम आज इनफ विद एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स एंड नाउन स्टडी करेंगे. सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स स्टार्ट द लेसन. The word enough changes position depending on whether it is modifying a noun, it is using whether it's an adjective or adverb. तो depending कि आप enough को किसके साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, noun, adjective और adverb, इन तीनों के साथ इसकी जो position होगी वो change हो जाएगी. When modifying an adjective or an adverb, enough is always follows. So अगर आपने enough को use करना है adjective और adverb के बाद तो ऐसे में इस condition में वो हमेशा adjective और adverb के बाद यूज़ होगा. It follows adjective and adverb. For example, are those French fries crisp enough for you? So the word crisp is actually adjective. So जब हमने enough को use करेंगे तो this should come after the adjective. So it sounds like are those French fries crisp enough for you? Furthermore, she speaks Spanish well enough to be in interpreter. So इसमें आपके पास adverb well है, उसके बाद हमारे पास word enough का इस्तेमाल हो रहा है. Another example is it is not cold enough to wear a heavy jacket. So the word cold is adjective. As a result, the word enough comes after it. When modifying a noun, enough precedes the noun. अगर आपने इसी word enough को noun के साथ mention करेंगे तो ऐसे में noun comes before the word enough comes before the word noun. For example, do you have enough sugar for the cake? So the word enough comes before noun. Jake bought enough red paint to finish the barn. Again, enough comes before the noun phrase red paint.
Another example, he does not have enough money to attend the concert. So the word money is noun, so the word enough comes before it. Another important thing to notice is the noun that is modified by enough may sometimes be deleted with no change in the meaning. In case of अगर आप यूज़ कर रहे हैं noun को with word enough के साथ, तो ऐसे में अगर आप word noun को omit भी कर देते हैं sentence के साथ, still only the word enough left makes the sense of the sentence. For example, I forgot my money. Do you have enough? So अगर आप इसमें लिखते हैं do you have enough money, so the sentence still makes sense. और अगर आप money को skip भी कर देते हैं, just like here, do you have enough, तो still it makes sense that you are asking about enough. So we understand that the speaker means enough money. So you in fact you omit the word noun, and yet the word enough is still enough, sufficient to make the sense of the meaning. So this was all about this word enough when you are using with noun, adjectives and adverbs. अब हम इसकी exercise को एक बार go through करते हैं. These are 10 question exercise. This is the first slide with 5 questions. इसके अंदर आपके पास parentheses में enough और enough followed by a word, a noun, adjective or adverb, or the word comes before and enough is after. तो आपने इसको sense करना है sentence को कि यहाँ पे आपका word enough को either should come before noun and enough should comes after adjective and adverb. तो इसके हिसाब से आपने sentence को आंसर करना है. अब आप next 5 questions देख लेते हैं. So this is 10 question exercise. Just pause your video here, answer all these questions, and I hope it makes sense to you because it's a very quick, simple answers. और and for those who are done with an exercise, हम अब answers को start करते हैं. So just आपको quick recap दे दूँ. Enough should come before noun and it should come after adjective and adverbs. So let's start the answers. First question is, there were not enough people to have the meeting, because the word people is a noun, so the word enough should come before the word. The second question is, Ellen has learned. Again, the word French is noun, so the word enough should come before it, so it should be enough French and not French enough. Question 3 is, do you have enough time to talk now? Again, the word time is noun, so the word enough time should come instead of time enough. Question 4, she drove enough fast or fast enough to win the race. Since the word fast is an adjective, so as a result she drove fast enough to win the race. The word enough should come after the adjective fast. Question 5, Mike will graduate from law school enough soon or soon enough to join his father's firm. Since the word soon, again it's an adjective, so the word soon enough should come after the adjective and it becomes soon enough. Question number 6, we arrived early enough to have some coffee before class began. Again, this is an adjective, so as a result हमारे पास इसका जो आंसर होगा that should be early enough, and enough should comes after adjective. This is question 7, it has rained hard enough to flood the low-lying areas. Again, the hard is आपका adjective है, so enough should come after the word adjective. Question 8, you should type enough slowly or slowly enough that you will not make an error. The word slowly is an adverb, and adverb may be आपका जो enough word होगा that comes after adverb, so this will be slowly enough. Question 9, he has just enough flour to bake the loaf of the bread. Since flour is noun, so the enough word should comes before the noun. Question 10, there are enough books for each student to have one. So the word book is a noun, therefore the word enough should comes before. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम. ये लेसन 51 है रिगार्डिंग टोफल सीरीज़ फॉर द बिगनर्स. आज हम इसमें कॉज कनेक्टर्स को स्टडी करेंगे. सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स स्टार्ट द लेसन. कॉज कनेक्टर्स में हम स्टडी करेंगे कि सेवरल ग्रामेटिकल डिवाइसेस जिसमें हम कॉज को शो करते हैं. फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग ऑफ विद अ वर्ड बिकॉज. नाउ बिकॉज विच इज़ ओनली फॉलो विच इज़ डज नॉट फॉलो बाय ऑफ, विच इज़ ओनली बिकॉज, इसको हमेशा फॉलो करेंगे बाय द क्लॉज. बिकॉज के वर्ड को जब खाली सिर्फ बिकॉज होगा उसको हमेशा क्लॉज के बाद से फॉलो किया जाएगा. एंड व्हाट क्लॉज इज़, अ क्लॉज स्टैंडिंग अलोन इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस, एंड बेयर इन माइंड अ कंप्लीट सेंटेंस मस्ट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. सो फॉर एग्जाम्पल द सब्जेक्ट, आपको जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा उसमें आपके पास बिकॉज है, एंड दैट शुड बी फॉलोड बाय अ क्लॉज, एंड द क्लॉज इज़ लाइक सब्जेक्ट वर्ब or their verb and subject. So a clause is alone, by standing alone is a complete sentence by itself. Furthermore, आपके पास because के साथ हम at times because of भी इस्तेमाल करते हैं. तो अगर आप because of यूज़ कर रहे हैं तो that always be followed only by a noun or a noun phrase. There must not be a conjugated verb, right? जब आप because of इस्तेमाल करें तो या तो वो सिर्फ
नाउन से फॉलो किया जाएगा या नाउन फ्रेज के साथ. एंड बेयर इन माइंड कि देयर शुड नॉट बी एनी कॉन्जुगेटेड वर्ब व्हाट्सोएवर. सो आपका जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा उसमें बिकॉज ऑफ फॉलोड बाय अ नाउन फ्रेज. बिकॉज ऑफ इज़ ऑफन इंटरचेंजेबल विद एक्सप्रेशन ड्यू टू. बिकॉज जब हमने पहले स्टडी किया था तो दैट इज़ ऑल स्टैंडिंग अलोन स्टफ थिंग, लेकिन जब आप बिकॉज ऑफ यूज़ कर रहे हैं तो दिस कैन बी समटाइम इंटरचेंजेबली यूज विद द वर्ड और द एक्सप्रेशन ड्यू टू. सो बिकॉज ऑफ और ड्यू टू एक्सप्रेशन को आप इंटरचेंजेबली भी इस्तेमाल कर सकते हैं. अब हम इसकी कुछ एग्जाम्पल्स को स्टडी कर लेते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ जैन वॉज वरिड बिकॉज इट हैड स्टार्टेड द रेन. Now this word because is followed by it which is subject and had started the rain, ये आपका verb है. तो this is a complete sentence all by itself with a stand alone sentence है जिसमें आपके पास subject और verb है. अगर हम इस पूरे sentence को start में नहीं भी पढ़ते तो it had started the rain, तो this all sentence is a separate with structure and with the verb and subject in it. So because हमेशा follow होगा with a clause. सेकेंड एग्जाम्पल है बिकॉज ऑफ की जिसमें जैन वॉज वरिड बिकॉज ऑफ द रेन. सो नाउ आपने बिकॉज ऑफ लिखा है तो यू जस्ट ओमिट एवरीथिंग एंड हैव द नाउन फ्रेज विच इज़ द रेन. It remember that because of is only followed by a noun phrase with no conjugated verb whatsoever. और because of को हम due to से भी interchange कर सकते हैं. तो अगर this sentence can also be referred as Jen was worried due to rain. So that's how you can mention them. Again, the second example is the students arrived late because there was a traffic jam. So again, was is a verb and the traffic jam is a subject itself. So the whole there was a traffic jam is a stand-alone sentence. So this is the clause. So because is followed by a clause. However, the students arrived late because of the traffic jam. So अगर आप simple the traffic jam बोलते हैं तो this does not make any sense because it's just a noun phrase. So because of is followed by the noun phrase और अगर हम because of को due to से replace करें, so the students arrived late due to the traffic jam. So the sentence still makes sense. Third example is we have to cut down on our driving because there is an oil shortage. So this clause which is there is an oil shortage is still a standalone, makes sense. Is verb and oil shortage is a subject and oil is a subject. So because it's followed by this clause there is an oil shortage. However, to make it to follow it with the because of, we have to cut down on our driving because of the oil shortage. So the oil shortage is a noun phrase here and it's not a clause with no verb conjugation whatsoever. और हम because of को due to से replace कर सकते हैं, यानी कि we have to cut down on our driving because of or due to the oil shortage. It is also possible for the cause clause to begin the sentence. समटाइम्स आपका जो कॉज क्लॉज है विच इज़ लाइक बिकॉज या बिकॉज ऑफ, हम इसको इस तरह भी एडजस्ट कर सकते हैं कि आपका जो है वो सेंटेंस से ही स्टार्ट हो रहा हो, सेंटेंस बिकॉज से ही स्टार्ट हो रहा हो. बिकॉज ऑफ द रेन वी हैव कैंसल द पार्टी. सो अगैन आपने बिकॉज ऑफ को सेंटेंस से स्टार्ट किया और येट द सेंटेंस स्टिल मेक द सेंस. सो द कॉज क्लॉज जो ये है यानी कि बिकॉज या बिकॉज ऑफ, इससे हम सेंटेंस को भी स्टार्ट कर सकते हैं. दिस वॉज ऑल अबाउट बिकॉज एंड बिकॉज ऑफ क्लॉज सेंटेंस, कॉज सेंटेंस. अब हम इसके सब एग्जाम्पल्स को एक्सरसाइज को करेंगे. इस एक्सरसाइज में यहाँ पर 10 क्वेश्चंस हैं. 5 क्वेश्चंस आर हियर ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ. जस्ट पॉज योर स्लाइड हियर वीडियो हेयर और आप इन ब्लैंक्स को फिल करें ईदर विद द बिकॉज और बिकॉज ऑफ. और इसको आप इसको जज कैसे करेंगे विद द फॉलोइंग, इधर इट्स आपका क्लॉज है सेंटेंस या इसके बाद आपका नाउन फ्रेज है, उसकी बेसिस पे आप बिकॉज ऑफ या बिकॉज को हेड यूज़ करेंगे. एंड द रेस्ट ऑफ द 5 क्वेश्चंस आर हियर फ्रॉम 6 to 10. अगेन इसमें आपके ब्लैंक्स हैं जिसको आपने बिकॉज या बिकॉज ऑफ से एज पर अप्रोप्रिएट मेंशन फिल करना है. एंड इफ़ यू आर डन विद इट हम इसको अब जंप करते हैं एक्सरसाइज को आंसर पे. The first question was, it was difficult to deliver the letter because the sender had written the wrong address on the envelope. Now this rest of the sentence is a clause which has the subject and the verb. So it should have a because in the start, no because of. Because it's a sentence, it's a clause. Second question is, we decided to leave early because the party was boring. And the party was boring is a subject and verb, everything here, so it's a clause. So इससे पहले हमेशा because आएगा. So question 3, rescue attempts were temporarily halted because of the bad weather. So the bad weather is a noun phrase, so इससे पहले because of आएगा. Question 4, they visited their friends often because they enjoyed their company. So they enjoyed their company is a clause with the subject and verb, so it should be followed preceded by the word because. Question 5, Paul cannot go to the football game because of his grades. So his grades is a noun phrase
So because his great does not give you whole sentence story, so इससे पहले हम because of देंगे. But the words like they enjoyed their company, this is the whole main clause with subject and verb जो कि हमको stand alone sentence है, so इससे पहले हमेशा because आएगा. Question 6 is Marcella was rewarded a scholarship because of her superior scholastic ability. It's just the noun phrase with no verb whatsoever, so it will be preceded by the verb because of. The question 7 is nobody ventured outdoors. Nobody ventured outdoors because of the hurricane warnings. Again, this is the noun phrase, so it will be preceded by the word because of. Question 8, we plan to spend our vacation in the mountains because the air is purer there. So the air is purer there has subject with the verb, and this is a main clause, is a clause itself with a standalone sentence, so isliye it should be preceded by the word because only. Then question 9, we have to drive around the bay because the bridge was destroyed in the storm. So the bridge is subject followed by a verb destroyed, so it's a standalone sentence, it's a clause, इसलिए इससे पहले हम because को mention करेंगे. The question 10 is the chickens have died because of the intense heat. So the intense heat is just the noun phrase, इसलिए इससे पहले हम because of को mention करेंगे. I hope this all makes sense. If it does, subscribe to my channel, like and share with your friends and family. Thanks for watching.